Welcome to AKGBTI class. In today's session, we will start with priority sector. Overview of priority sector, all 8 categories of priority sector. And then we will, in the next session, take up agriculture and some schemes related to agriculture, the latest schemes related to agriculture. Before we start the class, let's keep silent for 30 seconds और अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें. आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं. Video I've shared with you, the slides I've shared with you. Priority sector advances, there are 8 categories under priority sector advances. 8 category and priority sector advances की. Agriculture, micro, small and medium enterprises, export credit, education, housing, then social infrastructure, renewable energy, and others. We will cover all these in detail. In पूरी 8 categories को हम detail में cover करेंगे. Let's go ahead. आगे चलते हैं. एक एक करके हम इनको कवर करेंगे. इससे पहले कि हम आगे जाएं, सबसे पहले देखते हैं कि वीकर सेक्शन क्या है. What are the items that are considered a part of weaker section? क्योंकि वीकर सेक्शन के लिए हमें अलग से टारगेट मिला हुआ है, तो वीकर सेक्शन में whatever is included in weaker section, let's look at that. Advances given to small and marginal farmers. Small और marginal farmers को दिए गए सभी तरह के एडवांसेस वीकर सेक्शन होंगे. हाँ, बिल्कुल आराम से चलेंगे, आप टेंशन ना लिए. वहां पे सिर्फ नाम लिखे थे, इसलिए वो आप आगे भी करेंगे. लेट्स बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि हमें थोड़ा पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है वो भी कवर करना है ना. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिए गए सारे लोन्स, लोन का अमाउंट कितना भी हो वो वीकर सेक्शन होगा. देन एडवांसेस गिवन टू आर्टिजन्स, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. आर्टिजन्स, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में up to a maximum of rupees 1 lakh. 1 लाख रुपए तक का लोन वीकर सेक्शन माना जाएगा. Advances given to artisans, village and cottage industries up to rupees 1 lakh. Or loans given to individual women beneficiaries. Individual women beneficiaries को दिया गया 1 लाख रुपए तक का लोन up to rupees 1 lakh per borrower will be counted as weaker section. After that, there are 4 schemes. The beneficiaries of these schemes will be counted as weaker section. In schemes के beneficiaries weaker section count होंगे. First is NRLM scheme के beneficiary. NRLM, we will cover this scheme in detail. ये हम इनको डिटेल में करेंगे स्कीम्स को. नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन. देन NULM के बेनिफिशियरी, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बेनिफिशियरी वीकर सेक्शन होंगे. SRMS के बेनिफिशियरी, दिस इज स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स. उसके जो बेनिफिशियरी हैं वो भी वीकर सेक्शन होंगे.
स्कीम को रीनेम करके नमस्ते स्कीम कर दिया गया है, बट इन दिस सर्कुलर प्रायोरिटी सेक्टर इट इज स्टिल कॉल्ड एज SRMS बेनिफिशियरीज. देन DRI scheme, differential rate of interest scheme, beneficiaries of DRI scheme, they will all be weaker section. After that, advances given to any distressed farmer. Distressed farmer means poor farmer who has taken loan from money lenders at very high rates of interest. अब वो अपना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन चुकाना चाहता है, तो बैंक के पास आता है. Whatever loan is given to distressed farmer, so there is no limit on the amount of loan given to distressed farmer, it will be considered as weaker section. Loans given to distressed farmers, indebted to non-institutional lenders, basically money lenders. जिन्होंने मनी लेंडर से लोन लिया है, गरीब किसानों ने जिन्होंने साहूकारों से लोन लिया, वो ऋण चुकाने के लिए बैंक से लोन लें. नो लिमिट ऑन अमाउंट, नो लिमिट ऑन अमाउंट. After that, if a bank gives a loan to any other distressed person, किसी और डिस्ट्रेस पर्सन को लोन दे जो कि फार्मर ना हो, फार्मर के अलावा किसी और डिस्ट्रेस पर्सन को लोन दें फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी टू मनी लेंडर्स, फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम मनी लेंडर्स. मनी लेंडर से लोन लिया है, उसको चुकाने के लिए किसी और पर्सन को लोन दें जो कि फार्मर ना हो, तो कितना दे सकते हैं? 1 लाख रुपए तक का लोन देंगे तो वो वीकर सेक्शन माना जाएगा. लोन गिवन टू distressed persons other than farmers, with loan up to rupees 1 lakh, with loan up to rupees 1 lakh for repayment of money to money lenders. जो मनी लेंडर से उसने पैसा लिया है उसकी रिपेमेंट करने के लिए उसे 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाए. एंड आफ्टर दैट, overdraft under PMJDY, overdraft under PMJDY कितने तक का मिलता है? up to rupees 10,000, up to rupees 10,000. And there are few conditions. Age, maximum age हो सकती है up to 65 years. Age can be maximum up to 65 years. If the person is in rural area, then maximum annual household income can be up to rupees 1 lakh, and other areas maximum annual household income can be up to rupees 1.6 lakhs, 1,60,000. यदि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत हमने ओवरड्राफ्ट दिया 10,000 रुपए तक का, जिसकी सालाना आय रूरल एरिया में 1 लाख रुपए तक हो और अदर एरियाज में 1,60,000 रुपए तक हो, और दिए गए पर्सन को लोन जिसको दिया गया है उसकी मैक्सिमम एज 65 इयर्स हो, तो ऐसे लोन्स को वीकर सेक्शन माना जाएगा, इन्हें वीकर सेक्शन माना जाएगा. After that, loans given to SC/ST, loans given to SC/ST, loans given to persons with disabilities will be counted as weaker section. No limit on the amount of loan. Loans given to self-help group, self-help group को दिए गए loans, irrespective of the amount, will be counted as weaker section. And the last one is loans given to minorities. Minority community में दिए गए loans weaker section माने जाएंगे. These are 6 communities based on their religion, like Sikhs, Jains, Buddhists, Muslims, Christians and Zoroastrians. वो 6 communities में loans दिए जाएंगे तो वो weaker section माने जाएंगे. And in terms of schemes, there were only 4 schemes, the beneficiaries of which will be weaker section. If you want, you can just put a star and write that
PMEGP scheme beneficiaries will not be part of weaker section. PMEGP scheme beneficiaries will not be a part of weaker section unless they belong to SC/ST category, minorities, or disabled persons. If they are a part of SC/ST or they are minority या वो weaker या वो disabled persons हैं तो by virtue of being in those categories वो weaker section बनेंगे, पर otherwise स्कीम के बेनिफिशियरी होने के कारण से वीकर सेक्शन नहीं माने जाएंगे, वीकर सेक्शन नहीं माने जाएंगे. There is no ceiling for loans to minority communities for being counted as weaker section. After this, let's look at the targets. The targets and sub-targets for priority sector. Priority sector के targets और sub-targets क्या हैं? Targets and sub-targets are linked with A and BC or CEOBE, whichever is higher. Whichever is higher. The targets are linked with A and BC or CEOBE, whichever is higher. The full form of A and BC is adjusted net bank credit, adjusted net bank credit, and CEOBE is credit equivalent of off balance sheet exposure. Off balance sheet exposure. Off balance sheet is which does not come on balance sheet, which is shown as footnotes in the balance sheet in Schedule 12. Items like LC, BG, etc. जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी वगैरह जो बैलेंस शीट में ना दिखाकर बैलेंस शीट के बाहर दिखाए जाते हैं, उनको कंपेयर किया जाएगा. Targets will be computed on a quarterly average basis. Quarterly average basis पर targets को compute किया जाएगा, which means that every quarter this will be calculated A and BC or CEOBE. और 4 क्वार्टर का निकालने के बाद उसकी एवरेज निकालेंगे, उससे टारगेट कैलकुलेट किया जाएगा ईयर का टारगेट. एक पर्टिकुलर डेट पे ना निकाल के चारों क्वार्टर्स को एवरेज करके क्वार्टरली एवरेज निकाली जाएगी. What are the targets? So targets or sub-targets for priority sector. Targets or sub-targets for priority sector. जैसा मैंने पहले कहा, they are linked as a percentage of A and BC or CEOBE, whichever is higher. So अगर मैं कहीं यहाँ पर ये भी कह दूं कि this much percentage of A and BC, उसका मतलब यही है कि percentage of A and BC or CEOBE, whichever is higher. So first we will look at categories. Then second column here is domestic commercial banks. And third column is RRB and small finance bank. Commercial banks are domestic banks and foreign banks with 20 or more branches. With 20 or more branches in India. Priority sector ka overall target in case of commercial banks is 40%. It is 40%. In case of RRBs and small finance bank, overall target is 75%. This is also linked with A and BC only. पहले ये advances से linked होता था, अब ये भी A and BC से ही linked है. Then comes the target for weaker section. Target for weaker section in case of commercial banks is 12%. It is 12%. For RRBs, it is 15%. RRBs के केस में weaker section का target 15% है. Small finance bank में ये 12% ही रहता है. ये 12% ही रहता है. Small finance bank, SFB, इसमें 12% रहेगा. Agriculture का overall target is 18% in both categories. It is 18% in both categories. Then target for small and marginal farmer. Small and marginal farmer का target है 10%. 10% in both the categories. 10% in both the categories. After that,
Target for micro enterprises. Target for micro enterprises is 7.5%. It is 7.5% in both categories. ये 7.5% है दोनों ही कैटेगरी में. Then target for women beneficiary. Target for women beneficiary is 5%. It is 5%. This target for women beneficiary is not covered as a part of priority sector circular. It is in one of the guidelines from ministries where this target has been given, that priority sector lending, they should be given 5% of ANBs. तो वो यहाँ कवर किया. Then minority communities के लिए, minorities communities के लिए 15% of priority sector lending. 15% of priority sector lending. This target is not linked with ANBC. ये टारगेट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से है. जितनी भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करेगा एक बैंक, उसका 15% माइनॉरिटी कम्युनिटी को करेंगे. उसका 15% माइनॉरिटी कम्युनिटी को करा जाएगा. You must have taken down the targets. I चलते हैं. Now, if a bank does not achieve targets or sub-targets, so non-achievement of targets or sub-targets, if there's a shortfall in achieving targets or sub-targets, then shortfall to be deposited with RIDF established with NABARD. RIDF established with NABARD. RIDF is Rural Infrastructure Development Fund. Rural Infrastructure Development Fund. Rural Infrastructure Development Fund. Or it can be deposited with National Housing Bank, SIDBI, etc. इस तरह की डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ किसी में डिपॉजिट किया जो अप्रूव्ड बाय आरबीआई हैं, तो शॉर्टफॉल को रेलेवेंट कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा. व्हेन डिपॉजिटेड विद आरआईडीएफ, इट इज कंसीडर्ड एज अचीविंग एग्रीकल्चर. इफ डिपॉजिटेड विद SIDBI, then MSME. If deposited with NHB, then housing. Now, computation of A and B C, this should be looked at primarily by scale 4 and 5 participants. Rest of the participants, I don't think you will require this. इसलिए इसके साथ ज्यादा उलझन नहीं computation के लिए. A and B C की computation में there are 10 items which are there. इसको कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले first item is, item number 1 is bank credit. Item number is bank 1 is bank credit. उसमें से माइनस करेंगे बिल्स रीडिस्काउंटेड विद आरबीआई एंड अदर्स. बिल्स रीडिस्काउंटेड विद आरबीआई एंड अदर्स. तो आइटम नंबर 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2. इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड दिस इज कॉल्ड एज नेट बैंक क्रेडिट. यहां तक आ गया नेट बैंक क्रेडिट. नेट बैंक क्रेडिट. नेट बैंक क्रेडिट. नेट बैंक क्रेडिट. Then we will make certain additions. 3 के अंदर जो मुझे ऐड करना है वो है आइटम नंबर 4 और आइटम नंबर 8 और आइटम नंबर 10. ये 3 आइटम्स हैं जो मुझे ऐड करनी है. 4th आइटम, आइटम नंबर 8 और आइटम नंबर 10. बाकी आइटम्स माइनस करनी है. वो क्या आइटम्स हैं जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट में ऐड कर रहा हूं, जिससे कि उसको बढ़ा रहा हूं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को प्रायोरिटी सेक्टर के लिए. आइटम नंबर 4 इज आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स विद आरआईडीएफ और एनी अदर एलिजिबल फंड्स जहां पर शॉर्टफॉल जमा कराई है, प्लस एनी आउटस्टैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स. प्लस एनी आउटस्टैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स.
किसी भी तरह का अगर शॉर्टफॉल था और वो आरआईडीएफ में डिपॉजिट किया, शॉर्टफॉल था और पीएसएलसी लिए, तो वो एएनबीसी में ऐड होगा. Then item number 8, have a look at item number 8. Other investments eligible to be treated as priority sector. Again, you did not fund priority sector directly. आपने कुछ investments कर दिए like securitization notes में, some other kind of investments which give you benefit of priority sector. So वो भी A and BC में add हो. Those will also get added in A and BC. Now let's look at minus क्या करना है. माइनस करना है 5, माइनस करना है 6, आइटम नंबर 6, एंड माइनस करना है आइटम नंबर 7. 9th की बात मैं अभी करूंगा आपके साथ. What are item number 5, 6 and 7 which can be taken away from A and BC, जिसको कम करता है A and BC. Item number 5, 6 and 7 are exemptions on long-term bonds for infrastructure and affordable housing. So if there are exemptions for investment in long-term bonds for infrastructure and long-term housing, they will be reduced from A and BC. उनको A and BC में से minus करेंगे. Advances given against FCNRB or NRE deposits which qualify for exemption against CRR or SLR requirements. ऐसे एडवांसेस दिए गए FCNRB या NRE डिपॉजिट्स में जो CRR या SLR के रिक्वायरमेंट से भी एग्जेम्प्ट हैं, तो उनको भी पहले वो बैंक क्रेडिट में इंक्लूडेड थे, अब उन्हें माइनस कर दीजिए, ए एंड बीसी में से माइनस कर दीजिए. देन इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय बैंक्स इन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स of Government of India, they will also be taken away from A and BC. ये 3 आइटम्स, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, FCNRB वगैरह में जो लोन्स दिए हैं विच आर क्वालिफाइड फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम CRR, SLR, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट, दे विल बी रिड्यूस्ड. बाकी जो प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड आइटम्स थे, deposits under IIDF, any other investments in priority sector, they will be added. Now comes item number 9, which is face value of securities under held to maturity category under TLTRO 2.0. TLTRO 2.0, targeted long-term repo operations 2.0. These were done during COVID-19 to increase liquidity in the system. Banks were asked to make investments in the securities of NBFCs and microfinance institutions ताकि उन छोटी-छोटी institutions को पैसा मिले. तो उनमें हेल्ड टू मेच्योरिटी कैटेगरी के लिए सिक्योरिटीज में पैसा डाला बैंक्स ने, तो उसको माइनस किया जाएगा, ए एंड बीसी में से माइनस किया जाएगा. Similarly, extended regulatory benefits under SLF MF scheme, special liquidity facility mutual fund scheme. This was also issued during COVID-19. So if there were any kind of investments which were made under this, ये भी A and BC में से minus करेंगे. Why? Because they are then added back at 10th. इनको 10th नंबर पे add back करते हैं. Bonds or debentures in non-SLR categories under held to maturity category. ये जो ऊपर दोनों चीजें आ रही हैं, they are under non-SLR category और held to maturity category है, ये 9th पे माइनस होती हैं और 10th पे ऐड बैक हो जाती है. क्योंकि यहां पे हम बॉन्ड्स डिबेंचर्स इन नॉन SLR कैटेगरी अंडर हेल्ड टू मेच्योरिटी कैटेगरी को ऐड बैक कर रहे हैं, तो these 2 items will also get added back. That's why they were allowed a treatment of taking them out at item number 9. So item number 9 is minus, item number 9 is minus, and item number 10 is plus. जब 3 में से हम ये एडजस्टमेंट कर देते हैं, 3 + 4 minus 5 + 6 + 7 plus 8 minus 9 plus 10, and this leads to A and BC.
दिस बिकम्स ANPC, ये बन जाता है ANPC, ये बन जाता है हमारा ANPC। आइए नाउ लेट्स कम टू कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी करते हैं एग्रीकल्चर की। सबसे पहली कैटेगरी करते हैं एग्रीकल्चर की। आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू मेक, if you have any questions we will stop after each category, or I will give a pause for questions after some time. You can just type your questions at that point in time, क्योंकि आप बीच में अगर टाइप करते हैं तो चैट को देखना थोड़ा मुश्किल होता है। आई कैनॉट गो एंड स्टॉप इन बिटवीन, सारा एकदम स्पॉइल होता है। थोड़ा सा प्लीज। आई Agriculture has three categories. First is farm credit, loans given for farming and allied activities. Next is agriculture infrastructure. And the third is ancillary activities. Ancillary activities. अभी बात करते हैं, कुछ चीज लिखी गई है। आइए, ये जो लास्ट स्लाइड है उसको आप बाद में नोट करेंगे। उसको नोट करने के लिए प्लीज डोंट टेक टाइम हियर, मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है उसके अंदर। अदरवाइज हमारी बुक्स में भी जो आपके पास आने वाली है, बुक्स के अंदर भी वो पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आइए, फॉर्म क्रेडिट। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस टॉपिक ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, agriculture, MSME, schemes related to this, government schemes. This is one topic which is very, very fact-based. As the facts are stated in circulars, so the facts have to be taken there. We do not have to aim at going more in detail, why this was written, why this is not written, what will happen. Please focus on that. Wherever there are reasons, wherever there is a particular nuance, I will tell you that nuance. The topic is very lengthy, but this topic also comes across as a very useful topic for our examinations. So please take it in that spirit. उसी तरह से इसको लेके चलिए। Farm credit. Farm credit is loans given to farmers for agriculture and allied activities. खेती बाड़ी और कुछ पशुपालन जैसा काम करने के लिए, allied activities करने के लिए किसानों को दिए गए लोन फार्म क्रेडिट कहलाते हैं। ये सारे लोन फार्म क्रेडिट कहलाएंगे जो फार्मर्स को दिए जाएं एग्रीकल्चर के लिए और अलाइड एक्टिविटीज के लिए। अलाइड एक्टिविटीज आर लाइक एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरी, ऐसे और बहुत एग्जाम्पल्स हैं, फिशरी, पिगरी वगैरह वगैरह। जो भी पशुपालन का काम खेत पर करे वो अलाइड एक्टिविटी। सो इसमें क्या क्या आएगा? क्रॉप लोन्स टू फार्मर्स, क्रॉप लोन्स टू फार्मर्स एग्रीकल्चर के लोन्स है। लोन्स गिवन फॉर अलाइड एक्टिविटीज, लोन्स गिवन फॉर अलाइड एक्टिविटीज, लोन्स गिवन फॉर फार्म मैकेनाइजेशन, लोन्स फॉर फार्म मैकेनाइजेशन एंड इरिगेशन, एंड इरिगेशन। Farm mechanization will cover your tractor loan. It will cover your tractor loan, loan given for purchase of combine, harvester. All those will be a part of farm mechanization. Irrigation loans are loans for setting up of pump sets, etc., submersible machines. Those are irrigation. Loans for pre and post harvest activities. Loans given for pre and post harvest activities like spraying, weeding, then harvesting, grading, transportation of crop, which is marketing, selling, those kind of activities, उनके लिए दिए गए loans सारे farm credit का हिस्सा। So next category after this is loan against stored produce. Loan against stored produce. लोन अगेंस्ट स्टोर्ड प्रोड्यूस। फार्मर ने फसल उगा ली एंड एट द टाइम जब बहुत सारी प्रोड्यूस आ जाती है मार्केट में, द रेट्स गो डाउन। फार्मर को रेट कम होने का नुकसान ना उठाना पड़े, द फार्मर शुड बी एबल टू स्टोर द प्रोड्यूस फॉर सम टाइम, बट इन द मीनवाइल उसको पैसे मिल जाएं थोड़े टाइम के लिए,
ताकि वो आगे काम कर सके. तो दैट इज लोन अगेंस्ट स्टोर प्रोड्यूस. Loan against stored produce can be given in two methods. One, against pledge or hypothecation of his stored produce directly, or otherwise he stores that produce in warehouses recognized by Warehousing Corporation of India. वहां से मिलती है negotiable warehouse receipt. If that warehouse receipt is produced to us or e-negotiable warehouse receipt is produced to us, the amount of loan is different. So loans given to farmers against pledge or hypothecation of agricultural produce. Loans given to farmers against pledge or hypothecation of agricultural produce. In case of negotiable warehouse receipt or e-negotiable warehouse receipts, in case of negotiable warehouse receipts or e-negotiable warehouse receipts, maximum loan can be rupees 75 lakhs. And in case of other warehouse receipts, किसी और warehouse में रखा उसकी receipt लाके दी तो maximum loan होगा rupees 50 lakhs. Then the maximum loan will be rupees 50 lakhs. In case of negotiable warehouse receipts and e-negotiable warehouse receipts, maximum loan can be 75 lakhs, and in case of other warehouse receipts, maximum loan can be 50 lakh rupees. Maximum period for which this loan can be given is 12 months. Maximum period for which this loan can be given is 12 months. So loan against stored produce, maximum loan can be 75 lakhs or 50 lakhs, depending on where the produce has been stored, and maximum period is 12 months. Maximum period is 12 months. 12 months. After this, loan given to distressed farmers for repayment of loans to money lenders or non-institutional lenders. किसी गरीब किसान को साहूकारों का ऋण चुकाने के लिए दिया गया बैंक लोन फार्म क्रेडिट माना जाएगा. और ये कहां पर कवर किया था? वीकर सेक्शन में भी कवर किया था. तो इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रूरल डेट स्वैप. दिस इज नोन एज रूरल डेट स्वैप. लोन गिवन टू distressed farmers for repayment of loans to non-institutional lenders is called as rural debt swap. Rural debt swap. मैंने जो रिक्वेस्ट किया था उसको प्लीज एडहियर करिए. बीच बीच में दिस इज, आई विल अगेन रिपीट, दिस इज नॉट अ गॉसिप सेशन. आप जब चैट में टाइप करते हैं दैट टेल्स मी दैट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्लास. मैं क्लास की स्पीड इतनी रखे हुए हूं कि जिस पर अगर आप, इसका मतलब ना आप या तो लिख रहे या आप मेरी बात को सुनने से ज्यादा. सी व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर टाइपिंग, योर एंटायर ट्रेन ऑफ थॉट इज गेटिंग लॉस्ट. दिस इज अ वेरी साइंटिफिक मेथड. इस क्लास में अगर आप बैठे हैं, ऑनलाइन क्लास इज नॉट इजी टू रिसीव एंड देन रिमेंबर. आप इसमें बैठे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए. इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है अगेन सबसे, जो भी बातें आपको करनी है आप उसके बाद करिए, खूब करिएगा, मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा, बट प्लीज नॉट इन द मिडल ऑफ द क्लास. आपका ज्यादा नुकसान होगा मेरे से ज्यादा. दैट वेदर दिस इज वेरी डिफिकल्ट. somebody is asking me कि negotiable warehouse receipt क्या है. मैंने पहले बोला था क्लास के अंदर, negotiable warehouse receipt वो रिसीट है जो वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड वेयरहाउसेस में अगर आप फसल को रखते हैं तो वो वेयरहाउसेस इशू करते हैं नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट. उनकी इशू की हुई रिसीट्स को बोलते हैं नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट या ई नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट. ये बात मैंने पहले रिपीट की थी, थोड़ा सा उस पर आप फोकस करिए. चलिए, हाँ ये बात सही है, फ्यू पीपल आर डूइंग इट, बट कोई बात नहीं, उनके साथ भी मेरी रिक्वेस्ट है. एवरीबडी इज अ पार्टिसिपेंट हियर. वी आर इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ एवरीबडी. प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. लोन्स गिवन टू फार्मर्स अंडर केसीसी. किसानों को केसीसी में जो लोन देंगे वो तो स्वाभाविक है, दे आर अ पार्ट ऑफ
farm credit. They are a part of farm credit. Farm credit. Then, if a farmer wants to purchase land for doing agriculture, or a farmer, small and marginal farmer, if there's a small and marginal farmer wants to purchase land for performing agriculture on that land, तो उस लैंड को परचेज करने के लिए दिया गया लोन भी फार्म क्रेडिट माना जाएगा. लोन्स गिवन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, loans given to small and marginal farm for purchase of land. But what is the purpose for purchase of land? For agricultural purpose. घर बनाने के लिए नहीं, कुछ और करने के लिए नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर करने के लिए अगर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर लैंड परचेज करने के लिए लोन ले तो वो भी फार्म क्रेडिट होगा. एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट इज वांटिंग टू प्रमोट सोलर. अब उस पर ढेर सारी स्कीम्स हैं. इस साल प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना आई, उससे पहले कुसुम योजना आई. So all these schemes are promoting solar. So one of the things has been included in farm credit also. If the farmer puts up solar powered agricultural pump on his plant, on his farmland, पानी निकालने के लिए सोलर पावर से चलने वाला एग्रीकल्चर पंप सेट लगाए, या जो बिजली से पंप सेट चलता है उसको सोलराइज करने का काम करे, या वो सोलर से चलेगा उस पर खर्चा करे, या जो फार्मलैंड बैरन पड़ी है, बंजर पड़ी है, उस पर सोलर पावर बनाने का काम करे, कुछ सोलर पावर प्लांट लगा ले छोटा सा. इन सब कामों को करने के लिए जो लोन बैंक से लेगा वो भी फार्म क्रेडिट माने जाएंगे. प्लीज राइट. लोन गिवन टू फार्मर्स, लोन गिवन टू फार्मर्स, loan given to farmers for installation of standalone solar agricultural pumps, or solarization of grid connected यानी इलेक्ट्रिकल agricultural pumps, or installation of solar power plants on barren land. ये जितनी भी आइटम्स ऊपर अभी फार्म क्रेडिट में आई हैं, यहां पर कहीं पर भी अमाउंट की लिमिट नहीं है. इन पे किसी भी आइटम्स में अमाउंट की लिमिट नहीं है फॉर कंसीडरिंग देम इन प्रायोरिटी सेक्टर. आपका बैंक अपनी अपनी स्कीम्स में लिमिट बना सकता है, बट फ्रॉम अ प्रायोरिटी सेक्टर पर्सपेक्टिव देयर इज नो लिमिट ऑफ अमाउंट्स हियर. नाउ कम्स नेक्स्ट कैटेगरी वेयर इफ द फार्मर्स बिकम अ कॉर्पोरेट और मेक अ पार्टनरशिप फॉर्म. तो ऐसे पार्टनर्स को जो कॉर्पोरेट फॉर्म बना लें या पार्टनरशिप बना लें, उन्हें भी दिए गए लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर माने जाएंगे फॉर सर्टेन एक्टिविटीज. बट देन देयर आर लिमिट ऑफ अमाउंट्स बिकॉज दीज आर बिगर पीपल, तो लिमिट ऑफ अमाउंट डाला गया है. लोन्स गिवन टू कॉर्पोरेट, फार्मर्स और पार्टनरशिप फर्म्स. लोन्स गिवन टू कॉर्पोरेट, farmers and partnership firms. In case of agriculture and allied activities, maximum rupees 2 crore. Maximum loan will be rupees 2 crores. Agriculture और allied activities के लिए maximum loan होगा 2 करोड़ रुपए का. Next category is loan against stored produce. You can write same limits will apply. क्या थी वो लिमिट्स? 75 lakhs या 50 lakhs, और कितने महीने? 12 महीने के लिए. Loan against stored produce, same limits will apply. Then comes loan given to FPO or FPCs, farmer producer organizations or farmer producer companies.
with assured marketing. If farmers make FPO और FPC जो assured marketing का काम करे तो उन्हें कितने का लोन दे सकते हैं? ₹5 करोड़. मैक्सिमम लोन ₹5 करोड़. Maximum loan ₹5 crore. Assured marketing means this FPO or FPC ties up with some company, let's say Nestle, with ITC, to sell the produce of its farmer members. Now it has to buy that produce, तो उसके लिए ₹5 करोड़ तक का लोन लेगा और आगे बेचेगा. उनके साथ, उस कंपनी के साथ टाई अप है इसका. So loan given to FPO or FPC with assured marketing, ₹5 crore. दिस वॉज फार्म क्रेडिट. अब फार्म क्रेडिट के बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएंगे. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर एनहांसिंग एग्रीकल्चर, पुटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट. लोन्स गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज एनीवेयर इन इंडिया टू स्टोर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. पूरे इंडिया में कहीं पे भी, रूरल एरिया अर्बन एरिया का कंसेप्ट नहीं है, कहीं पर भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्टोर करने के लिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाया जाए तो वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाएगा. सिमिलरली फॉर सेटिंग अप ऑफ अ सॉइल कंजर्वेशन फैसिलिटी, सॉइल कंजर्वेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, सीड प्रोडक्शन, कुछ अच्छे बीज बनाने की अगर फैसिलिटी लगा रहा है वो सब, प्रोडक्शन ऑफ बायोपेस्टिसाइड, बायोफर्टिलाइजर्स, और सेटिंग अप ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग. वो जो अर्थवॉर्म से कंपोस्ट बनाते हैं, दैट इज वर्मी कंपोस्टिंग. इसमें आइटम्स बहुत सारी हैं, रफली अराउंड 40 आइटम्स आते हैं. वी हैव पिक्ड एंड चोजन वेरी स्पेसिफिक. देयर आर आइटम्स लाइक सेटिंग अप ऑफ बायोगैस प्लांट एंड थिंग्स लाइक दैट आल्सो इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर. लोन कितना दिया जा सकता है? मैक्सिमम लोन अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी ₹100 crore per borrower. Maximum loan can be ₹100 crore per borrower from banking system. एक borrower एक बार में 100 करोड़ रुपए ले सकता है बैंकिंग सिस्टम से. अलग अलग बैंकों से भी ले तो मैक्सिमम 100 करोड़ मिल सकते हैं. और अगर 100 करोड़ से ज्यादा का लोन मिला उसे तो सारा का सारा लोन प्रायोरिटी सेक्टर से बाहर हो जाएगा. वो कैसे पता चलेगा? हम फार्मर से डिक्लेरेशन लेते हैं कि उसने अभी तक कितना लोन लिया है, एंड दैट इज हाउ वी कम टू नो अबाउट इट. After agriculture infrastructure, let's look at ancillary activities. Ancillary activities other than this, but considered in agriculture. Loans given to cooperative society of farmers. Loan given to cooperative society of farmers. क्या काम करती हो cooperative? For purchase of the produce of members. For purchase of produce of members. कोई ऐसी कोऑपरेटिव हो फार्मर्स की जो अपने फार्मर्स की परचेज को, अपने फार्मर्स की प्रोड्यूस को खरीद कर मंडी में बेचने का काम करती हो. ये कोऑपरेटिव बनाई इसलिए है कि अपने फार्मर्स की प्रोड्यूस को खरीदे और आगे बेचने का काम करे. तो जब उनसे खरीदेगी उसके लिए लोन चाहिए. कितना होगा? मैक्सिमम लोन ₹5 crore. मैक्सिमम लोन ₹5 crore. Maximum loan ₹5 crore. Maximum loan ₹5 crore. Then is loan for setting up of agri clinic or agri business center. Agri business center. एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर के लिए लगाने के लिए दिए गए सभी बैंक लोन एंसिलरी एक्टिविटी में काउंट होंगे.
यहां पर लोन पर कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑन लोन। ये स्कीम मैं आपको करवाऊंगा एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर की, वेयर यू विल सी दैट देयर इज नो लिमिट ऑन द लोन, the limit is only on the project cost. Limit is only on the project cost. We will cover that. What is the limit on project cost? Then loan given for food and agro processing. Loan given for food and agro processing. Loan given for food and agro processing. फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगाने के लिए अगर कोई लोन दिया गया तो मैक्सिमम लोन ₹100 करोड़, maximum loan ₹100 crore per borrower from the banking system. Maximum loan ₹100 crore per borrower from banking system. From banking system. From banking system. Then comes on lending. On lending is when loans are identified by another institution like microfinance institution, NBFC, उनके पास borrower आता है. Now there is an identified borrower, they come to the bank, they say मैं इसको लोन दूंगा, इसको लोन देने के लिए आप मुझे लोन दे दें. So when a bank gives loan to any other financial institution for further lending it to identified borrowers, it is on lending. Loan given to microfinance institutions, loan given to microfinance institutions for on lending in agriculture sector. In agriculture sector, it is a part of ancillary activities. Amount of loan पे limit नहीं है यहाँ. Then is loan given to NBFCs. NBFCs को again for on lending. किस तरह की ऑन लैंडिंग? फॉर टर्म लैंडिंग अंडर एग्रीकल्चर. अगर एनबीएफसी एग्रीकल्चर के फील्ड में टर्म लैंडिंग करे और उसके लिए ऑन लैंडिंग करे बैंक के साथ, तो उसके लिए दिए गए लोन्स एंसिलरी एक्टिविटी का हिस्सा होंगे. पर यहां पर लोन अमाउंट पे लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट ₹10 लाख पर फार्मर बोरोवर. पर फार्मर बोरोवर. पर फार्मर बोरोवर. एक फार्मर बोरोवर को मैक्सिमम टर्म लैंडिंग के लिए कितना लोन दे सकती है वो एनबीएफसी? 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है. मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक के लोन की ऑन लैंडिंग की जाएगी. मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की लोन की ऑन लैंडिंग की जाएगी. टर्म लैंडिंग क्या है? टर्म लैंडिंग का मतलब है जैसे टर्म लोन, मतलब बड़े काम के लिए दे, वो वर्किंग कैपिटल क्रेडिट की तरह ना दे, टर्म लोन. आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स अंडर आरआईडीएफ. जो आरआईडीएफ में आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स रखे थे वो भी यहां पे काउंट होंगे, एंसिलरी एक्टिविटी में काउंट होंगे. देन लोन्स गिवन टू स्टार्टअप. अगर कोई स्टार्टअप एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटी का काम करे तो उसे दिया गया 50 करोड़ रुपए तक का लोन एंसिलरी एक्टिविटी में काउंट किया जाएगा. लोन गिवन टू स्टार्टअप्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, कितने तक? अप टू ₹50 करोड़. अप टू ₹50 करोड़. अप टू ₹50 करोड़. अप टू ₹50 करोड़. आगे देखिए, यहां से करीब करीब कोई सवाल नहीं आता इनमें से फुल फॉर्म आ जाती है. एंड फुल फॉर्म ऑल्सो प्राइमरीली एट स्केल 1 लेवल. लैंप्स के ऊपर बड़ा फोकस है. पिछले साल में 3 या 4 बार अलग अलग एग्जामिनेशंस में लैंप्स की फुल फॉर्म पूछ चुका है. वो लैंप्स की फुल फॉर्म पूछता है. व्हाट आर लैंप्स? सो बैंक लोन्स गिवन टू पैक्स. पैक्स इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज. FSS, Farmers Service Society, and large-sized Adivasi multi-purpose societies. Large-sized Adivasi multi-purpose societies, LAMPS, for on lending. अगर इनको भी ऑन लैंडिंग के लिए एग्रीकल्चर में लोन दिया तो एंसिलरी एक्टिविटी का हिस्सा होगा.
तो एंसिलरी एक्टिविटी का हिस्सा होगा। एंड लोन गिवन टू कस्टम सर्विस यूनिट्स, loan given to custom service units will also be a part of ancillary activities. Custom service units are people, let's say किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया 100, now he provides tractors, किराए पे ट्रैक्टर देता है आपकी फील्ड की प्लोइंग करने के लिए। हार्वेस्टर खरीद लिए तो हार्वेस्टिंग करने का काम कर देता है आपके लिए। इस टाइप का कोई काम करते हैं तो these are custom service units, these are custom service units. All these will be a part of ancillary activities. They will be a part of ancillary activities. Then comes what are small and marginal farmers? What will be included in small and marginal farmer? Small and marginal farmer may, first let's look at marginal farmer, where land holding is up to 1 hectare. Land holding is up to 1 hectare. 1 hectare का मतलब है 2.5 एकड़ तक अगर लैंड होल्डिंग है तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर माना जाएगा। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर माना जाएगा 2.5 एकड़ तक। 2.475 एकड़ होती है प्रिसाइसली, तो 2.5 एकड़ बोल दिया। स्मॉल फार्मर्स, लैंड होल्डिंग मोर देन 1 हेक्टेयर, लैंड होल्डिंग मोर देन 1 हेक्टेयर एंड अप टू 2 हेक्टेयर्स, up to 2 hectares will be small farmer, will be a small farmer. Then landless agricultural laborers, tenant farmers, जिनके पास लैंड ही नहीं है वो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में काउंट होंगे। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स engaged in agriculture and allied activities, engaged in agriculture and allied activities, उनको दिए गए लोन्स भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में काउंट होंगे। देन लोन्स गिवन टू इंडिविजुअल्स, loans given to individuals engaged in allied activities, जो सिर्फ allied activity करें, कितने का लोन ले? अप टू ₹2 लाख, अप टू ₹2 लाख तक का लोन होगा अगर allied activity के लिए, तो ये भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर माने जाएंगे, ये भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर माने जाएंगे। नेक्स्ट इज लोन गिवन टू एफपीओ और एफपीसी ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स, फार्मर्स मिलके एफपीओ एफपीसी बना लें, या कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स और कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स। तो कब वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होंगे? इफ लैंड होल्डिंग शेयर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स is not less than 75%। 75%। ये जो एफपीओ एफपीसी या कोऑपरेटिव बनाई लैंड पूल करके, उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का लैंड होल्डिंग शेयर कम से कम 75% हो, और मैक्सिमम लोन गिवन इज ₹5 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी। मैक्सिमम लोन गिवन इज ₹5 करोड़, मैक्सिमम लोन गिवन इज ₹5 करोड़। 5 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम लोन दिया गया हो, और लैंड होल्डिंग शेयर of small and marginal farmer is not less than 75%. Is not less than 75%. Is not less than 75%. अगर कोई अभी भी कोई सवाल बचा हो एग्जाम से रिलेटेड तो पूछिए। I will take questions which will be relevant for examination. अगर कोई ऐसी चीज होगी तो मैं बता दूंगा, अगर कुछ है तो टाइप कर लें। मैं I will just take a pause for 10-15 seconds and then we'll go to the next category. फॉर्म क्रेडिट और केसीसी में क्या डिफरेंस है? फॉर्म क्रेडिट इज अ मच मोर अम्ब्रेला थिंग, जहां पे ज्यादा बड़ी बड़ी आइटम्स आ रही हैं, और भी केसीसी उसका एक पार्ट है। केसीसी में दिए गए लोन्स फॉर्म क्रेडिट का हिस्सा होंगे। फॉर्म क्रेडिट में तो आपने देखा डायरेक्टली भी आपको अगर और तरह का लोन दे रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए लैंड खरीदने का लोन भी दे रहे हैं, सोलर पावर प्लांट लगाने का भी दे रहे हैं, वो भी फॉर्म क्रेडिट का हिस्सा है।
स्टार्टअप में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, स्टार्टअप के लिए पूरा उसका सर्कुलर है, स्टार्टअप में क्या एक्टिविटीज काउंट, किसको स्टार्टअप माना जाएगा। एफपीओ एंड एफपीसी का फुल फॉर्म है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज। 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के नेम की आपको जरूरत नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वर्सेस एनबीएफसी। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो छोटे छोटे लोन्स देती हैं, very small loans. Those are microfinance institutions, while they have also been defined in a manner. चलिए, I'm थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो पोर्शन था ना, जो एफपीओ एफपीसी वाला, दिस वाज प्राइमरीली मेंट फॉर आवर स्केल 3, 4 एंड 5 पार्टिसिपेंट्स। आप अगर स्केल 1 और 2 में है तो इसको छोड़ सकते हैं इजीली, आपके लिए बिल्कुल दिस नॉट रेलेवेंट देयर। Now let's look at micro, small and medium enterprises. Micro, small and medium enterprises, MSME. MSME. How are they classified? उनकी क्लासिफिकेशन दो क्राइटेरिया पे रखी गई है विद इफेक्ट फ्रॉम 2020 में, जो जून में गजट नोटिफिकेशन आया, दैट दे आर लिंक्ड विद इन्वेस्टमेंट। जितना उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है उससे लिंक्ड है, और जितना उनका एनुअल टर्नओवर है, दोनों चीजों से लिंक्ड है उनकी क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, एंड द सेकंड इज एनुअल टर्नओवर। उनका एनुअल टर्नओवर कितना है? एनुअल टर्नओवर कितना है? माइक्रो यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स और मीडियम यूनिट्स। माइक्रो इज if investment is up to rupees 1 crore, if investment is up to rupees 1 crore and turnover, annual turnover is up to rupees 5 crore, up to rupees 5 crores. अगर यूनिट का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, मोर देन रुपीज 1 करोड़ एंड अप टू रुपीज 10 करोड़, अप टू रुपीज 10 करोड़, and annual turnover is up to rupees 50 crores, more than rupees 5 crores and up to rupees 50 crores, then the unit is small category. तब यूनिट को स्मॉल कैटेगरी काउंट किया जाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ तक हो, मोर देन रुपीज 10 करोड़ एंड अप टू रुपीज 50 करोड़, अप टू रुपीज 50 करोड़, and annual turnover is more than rupees 50 crores and up to rupees 250 crores, up to rupees 250 crores. Turnover is more than rupees 50 crores and up to rupees 250 crores. तो यूनिट मीडियम कैटेगरी में काउंट, मीडियम कैटेगरी में काउंट। क्लासिफिकेशन के लिए दोनों कैटेगरी में चेक किया जाएगा। अगर एक कैटेगरी लोअर में है और दूसरी कैटेगरी हायर में है, तो हायर कैटेगरी वाली क्लासिफिकेशन में यूनिट को क्लासिफाई करेंगे। लेट्स से इन्वेस्टमेंट माइक्रो में मीट हो रही है और एनुअल टर्नओवर स्मॉल में मीट होता है, देन द यूनिट विल बी क्लासिफाइड एज स्मॉल एंटरप्राइज, देन द यूनिट शैल बी क्लासिफाइड एज स्मॉल एंटरप्राइज। Some other points for classification under priority sector. How much amount of loan can be given? Amount of loan in case of MSME, there is no limit prescribed. There is no limit prescribed. A bank can give need-based loan. Need-based loan can be given for classification in priority sector. For classification in priority sector. Then units in KVI sector. Units in KVI sector
khadi and village industry sector shall be classified as micro enterprises. All units in KVI sector shall be classified as micro enterprises. Shall be classified as micro enterprises. Next is overdraft under PMJDY. Overdraft under PMJDY up to rupees 10,000. Up to rupees 10,000. Up to rupees 10,000 will be classified as micro enterprises. Will be classified as micro enterprise. Will be classified as micro enterprise. Then loan given to NBFC. Loan given to NBFCs for on lending. For on lending. किसको करेंगे on lending? To micro and small enterprises. To micro and small enterprises. There is no medium here. अगर NBFC को माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को ऑन लैंडिंग करने के लिए लोन दिया, कितने तक का? अप टू रुपीज 20 lakhs. अप टू रुपीज 20 lakhs. अप टू रुपीज 20 lakhs. ये जो ऑन लैंडिंग का लोन है ये आरआरबी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता. तो एनबीएफसीज को अगर ऑन लैंडिंग के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन दिया, ऑन लैंडिंग करें माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को, तो वो भी यहां पर काउंट होगा. देन लोन गिव अप टू रुपीज 50 crores. Loan up to rupees 50 crores given to startups meeting the definition of MSME. अगर कोई स्टार्टअप MSME की डेफिनेशन मीट करता हो, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्राइटेरिया मीट करता हो और उसे 50 करोड़ तक का लोन दिया जाए, उसे 50 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाए, तो उसे भी MSME में काउंट करेंगे. Loans sanctioned by banks to NBFC MFIs. जो NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होंगी, उनको खुद के लिए उनको दिए गए लोन्स, ऑन लैंडिंग के लिए नहीं, उनको लोन दिया गया डायरेक्टली, वो भी यहां पर काउंट किया जाएगा. लोन्स अंडर जनरल क्रेडिट कार्ड्स. लोन्स गिवन अंडर जनरल क्रेडिट कार्ड्स, जैसे लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, उस तरह की स्कीम्स में जो भी लोन्स दिए गए वो भी MSME में काउंट. आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स विद सिडबी और मुद्रा लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल. प्रायोरिटी सेक्टर में शॉर्टफॉल था, आपने सिडबी में पैसा जमा करवाया, मुद्रा में पैसा जमा करवाया, मुद्रा लिमिटेड का, तो वो यहां पर काउंट होगा MSME. नाउ कम्स, अगर यूनिट का अपवर्ड रिवीजन हो जाए, if the unit's turnover increases during the year or unit's investment increases during the year, unit माइक्रो थी, माइक्रो से स्मॉल हो गई, यूनिट स्मॉल थी, स्मॉल से मीडियम हो गई, इसके कारण से, तो उसकी कैटेगरी कब चेंज होगी? जिसका क्वार्टर में चेंज होगा उसमें, साल के एंड पे कब? 3 साल तक उसकी कैटेगरी चेंज नहीं करी जाएगी. इन केस ऑफ upward change, please write, in case of upward change in investment or turnover or both, investment या turnover या दोनों में ऊपर जाने पर unit will maintain same status or prevailing status. Unit will maintain prevailing status or same status till expiry of 3 years, till expiry of 3 years, till expiry of 3 years from the date of such change, from the date of such change. उसकी क्लासिफिकेशन 3 साल तक अपवर्ड चेंज के कारण चेंज नहीं की जाएगी. अपवर्ड चेंज के कारण चेंज नहीं की जाएगी. Some other features. If an entrepreneur has several units in various states, those units will be carrying different GST numbers. तो उनका GST नंबर अलग होगा, उनका अपना टर्नओवर आएगा GST नंबर के अकॉर्डिंग. तो उनको
अलग अलग काउंट करें, क्या करें, उनका टर्नओवर देखने के लिए, उनकी इन्वेस्टमेंट देखने के लिए। तो यहां पे एक बात कही गई, यूनिट्स विद डिफरेंट जीएसटिन्स, यूनिट्स विद डिफरेंट जीएसटिन्स लिस्टेड अगेंस्ट सेम पैन, लिस्टेड अगेंस्ट सेम पैन, अगर उसका एक पैन है, उसके अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी नंबर हैं, शैल बी ट्रीटेड एज वन एंटरप्राइज। उनका टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट सब इकट्ठा करके देखा जाएगा। अगर एक पैन के अंडर डिफरेंट जीएसटी के अंदर यूनिट्स हैं तो उनका सब कुछ एक एंटरप्राइज की तरह माना जाएगा। ऑल यूनिट्स शुड ऑब्टेन उद्यम रजिस्ट्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल यूनिट्स शुड ऑब्टेन उद्यम रजिस्ट्रेशन। नाउ आई एम अ स्मॉल यूनिट, अब वेरी स्मॉल इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज हूं मैं, मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, मेरा तो उद्यम रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं, तो उसके लिए आरबीआई मेड उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, प्लीज राइट। In case of informal micro enterprises, in case of informal micro enterprises, in case of informal micro enterprises, Udyam Assist Certificate, Udyam Assist Certificate generated on Udyam Assist platform, generated on Udyam Assist platform, generated on Udyam Assist platform will be taken, will be taken. Then इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कहां से ली जाएगी इन्वेस्टमेंट? सो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट will be linked to income tax return, will be linked to income tax return of previous year, will be linked to income tax return of previous year, and will be based on written down value basis, and will be based on written down value basis and not original cost, and not original cost. जो इन्वेस्टमेंट है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं देखी जाएगी, इनकम टैक्स रिटर्न में जितना रिटर्न डाउन वैल्यू दिखाया गया होगा उसे इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। एमएसएमई के पर्पस से प्रायोरिटी सेक्टर काउंट करने के लिए रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड को भी एमएसएमई माना जाएगा फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। And export turnover shall be excluded while calculating turnover. Export turnover shall be excluded while calculating turnover. Export turnover को exclude करेंगे turnover निकालते हुए। Investment में से क्या exclude किया जाएगा? Some exclusions from investment: cost of generator, pollution controlling equipment, and tools, dies, etc. Cost of generator, gensets, pollution controlling equipment, or tools, dies, etc. shall be excluded from the investment in plant and machinery. Shall be excluded from investment in plant and machinery. Investment in plant and machinery. उसमें से exclude करेंगे उसको। अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी एक्सपोर्ट क्रेडिट की है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते बट कैटेगरी को देखते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट में इफ द एक्सपोर्ट क्रेडिट इज डन इन एग्रीकल्चर और एमएसएमई देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर और एमएसएमई। सो एक्सपोर्ट क्रेडिट अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई विल बी टेकन इन प्रायोरिटी सेक्टर। एक्सपोर्ट क्रेडिट अदर देन एग्रीकल्चर or MSME will be classified as priority sector. For domestic banks, incremental export credit over preceding year or corresponding period of preceding year, पिछले साल से इस साल में जितना एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट क्रेडिट हुआ है, जितना इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट क्रेडिट है, दैट विल बी काउंटेड
as priority sector up to 2% of A and B C, up to 2% of A and B C. For loans with maximum sanction limit, for loans with maximum sanction limit, for loans with maximum sanction limit up to rupees 40 crores. For loans with maximum sanction limit up to rupees 40 crores per borrower. इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट देखेंगे, पर कौन से केसेस का देखेंगे? सिर्फ उन्हीं एक्सपोर्ट क्रेडिट के केसेस को देखेंगे जिनमें सैंक्शन लिमिट 40 करोड़ रुपए पर बोरोवर तक है. उनके अंदर भी मैक्सिमम कितना काउंट कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में? मैक्सिमम कैन बी अप टू 2% ऑफ एएनबीसी, अप टू 2% ऑफ एएनबीसी. ये डोमेस्टिक बैंक्स के लिए था. इन केस ऑफ फॉरेन बैंक्स विद 20 और मोर ब्रांचेस, in case of foreign banks with 20 or more branches, incremental export credit over preceding year up to 2% of ANBC, up to 2% of ANBC. 40 करोड़ वाली लिमिट हट जाती है, इनके लिए 40 करोड़ वाली लिमिट हट जाती है. In case of foreign banks with less than 20 branches, अगर less than 20 branches in India हो, then up to 32% of ANBC or CEOBE, whichever is higher. Then up to 32% of ANBC or CEOBE, whichever is higher. Incremental की कंडीशन भी हट गई, up to 32% हो गया for foreign banks with branches less than 20. इसके बाद एक बहुत छोटी सी कैटेगरी है एजुकेशन की. एजुकेशन लोन्स सैंक्शनड टू इंडिविजुअल्स अप टू रुपीज 20 lakhs. Education loans sanctioned to individuals up to rupees 20 lakhs, up to rupees 20 lakhs. If the sanctioned loan exceeds 20 lakh rupees, अगर सैंक्शन लोन 20 लाख से ज्यादा का हो जाए तो फिर पूरा का पूरा लोन प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट नहीं होगा. Then the entire loan will not be counted as priority sector. और जो अमाउंट यहां पर इंक्लूड किया जा रहा है वो सैंक्शनड अमाउंट है, नॉट द आउटस्टैंडिंग अमाउंट. Outstanding may be higher than 20 lakhs, but sanctioned amount should not be more than 20 lakh rupees. Should not be more than 20 lakh rupees. Then let's look at the category of housing. Housing. सबसे पहले loans given to individuals for purchase, construction or repair of house. लोगों को घर खरीदने, बनाने, उसकी रिपेयर के लिए दिए गए loans. In case of metropolitan centers, loans given in metropolitan centers. Metropolitan centers have been defined here as where population of 10 lakh and above. Population of 10 lakh and above. सिर्फ यहां पर डिफाइन किया उसको. And loans given in other centers. Loans given in other centers. Maximum loan in case of metropolitan center can be rupees 35 lakhs. Rupees 35 lakhs. And maximum cost of the house can be rupees 45 lakhs. Can be rupees 45 lakhs. Can be rupees 45 lakhs. अधिकतम लोन दे सकते हैं 35 लाख रुपए का और कॉस्ट ऑफ हाउस हो सकता है 45 lakhs. In case of other centers, maximum loan can be rupees 25 lakhs and maximum cost of house can be 30 lakhs. Maximum cost of house can be 30 lakhs. Can be 30 lakhs. In case of repair of such houses which meet the cost limits, जिनकी cost limits यहां से meet करती हैं. In case of metropolitan centers, repair के लिए maximum loan हो सकता है 10 लाख रुपए का और अदर सेंटर्स में रिपेयर के लिए मैक्सिमम लोन हो सकता है 6 लाख रुपीस का. मैक्सिमम लोन हो सकता है 6 लाख रुपीस का. 6 लाख रुपीस का.
यहाँ पर एक सवाल आया था, मैं उसका सिर्फ बीच में मैंने देखा अभी पॉज लेने पे। एजुकेशन लोन पे पूछा उन्होंने कि अगर एक फादर को एजुकेशन लोन दिया एक बेटे की एजुकेशन के लिए, और फिर दूसरे बेटे की एजुकेशन के लिए, फादर को लोन नहीं मिलता, एजुकेशन लोन जो स्टूडेंट होता है उसको दिया जाता है। फादर या कोई भी पेरेंट्स या गार्जियन को बोरोवर बनते हैं, लोन इंडिविजुअल को दिया जाता है, जो पढ़ने जा रहा है उसको दिया जाता है, इसलिए उसका लोन काउंट होगा, पेरेंट का लोन काउंट नहीं होता, वो तो को बोरोवर बनता है। आइए अगली बात करते हैं। बैंक लोन गिवन टू एनी गवर्नमेंटल एजेंसी। अगर बैंक ने किसी गवर्नमेंटल एजेंसी को लोन दिया, किस काम के लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस फॉर स्लम ड्वेलर्स, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए अगर कोई सरकारी संस्थान घर बनाए और उसे लोन दिया जाए, then it will be counted as priority sector if carpet area of such houses, carpet area of such houses is not more than 60 square meter, is not more than 60 square meter. बनाए गए घरों का कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा ना हो, 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा ना हो, 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा ना हो। Next is bank loan for affordable housing projects. Bank loan for affordable housing projects. Affordable housing projects में दिए गए बैंक लोन प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होंगे if at least 50%, if at least 50% of FAR or FSI is for houses with carpet area up to 60 square meter, with carpet area up to 60 square meter. In case of affordable housing projects, अगर कम से कम 50% FAR या FSI ऐसे घरों के लिए रखा गया है जिनका कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर तक हो। बैंक लोन्स गिवन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आगे बोरोवर्स को 20 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, उसके लिए आपसे लोन लेने आए, एक तरह की ऑन लैंडिंग ही करवा रही है, तो वो ऐसे लोन्स भी प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होंगे। बैंक लोन्स गिवन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मैक्सिमम लोन बाय हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टू बोरोवर ₹20 lakhs. Maximum loan by housing finance company to borrower ₹20 lakhs. Now we have seen that there was a term of on lending to NBFC in agriculture, on lending to NBFC in MSME, housing finance company here in housing. If a bank, how much can a loan be given to these participants? सारा का सारा इनको देकर प्रायोरिटी सेक्टर पूरा नहीं कर सकते। सो लोन गिवन टू एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, फॉर एग्रीकल्चर, एमएसएमई एटसेट्रा कैन बी मैक्सिमम 5% of priority sector lending. It can be maximum 5% of priority sector lending. It can be maximum 5% of priority sector lending. Maximum 5% of priority sector lending. FAR FSI की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता, इसको दोबारा बोलता। फ्लोर एरिया रेशो और फ्लोर स्केयर इंडेक्स होता है, आपके सर्कुलर में भी FAR और FSI वर्ड यूज हुआ है, इसलिए उसकी कोई आपको जरूरत नहीं है। फुल फॉर्म्स वहीं पे खुलवाई जाती हैं जहां पर सर्कुलर में ऑलरेडी उनकी फुल फॉर्म्स दी होती है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए लोन्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए लोन्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए लोन्स, देयर आर 4 कैटेगरीज जिसमें अगर लोन दिया जाए तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड health care facilities in tier 2 to tier 6 centers
at tier 2 to tier 6 centers. कितना लोन दे सकते हैं? For the purpose of schools, drinking water and sanitation facilities, maximum rupees 5 crores, maximum rupees 5 crore per borrower, and for health care, maximum rupees 10 crores, maximum rupees 10 crores per borrower, maximum rupees 10 crores per borrower, maximum rupees 10 crores per borrower, maximum rupees 10 crore per borrower. मैक्सिमम लिमिट आपने देख लिया. नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी फॉर जनरेटिंग एनर्जी यूजिंग सोलर बेस्ड पावर जनरेटर, बायोगैस मास जनरेटर्स, या यूजिंग ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक रिन्यूएबल एनर्जी फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम्स एक्सेट्रा, कम्युनिटी लाइटिंग सिस्टम्स एक्सेट्रा. उस काम के लिए कितना दे सकते हैं? फॉर सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स, street lighting systems, etc., maximum loan can be rupees 30 crores. Maximum loan can be rupees 30 crores per borrower. And in case of individual households, maximum loan can be rupees 10 crores. Maximum loan can be rupees 10 lakhs. Sorry, I said crores. Maximum loan can be rupees 10 lakhs. Maximum loan can be rupees 10 lakhs. Then is the category of others. Others में क्या आएगा? वो एक वीकर सेक्शन में हमने कैटेगरी किया था. लोन गिवन टू एनी डिस्ट्रेस पर्सन अदर देन फार्मर्स फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन टू मनी लेंडर्स अप टू रुपीज 1 लाख. अप टू रुपीज 1 लाख वो वन अदर की कैटेगरी में आएगा. किसी गरीब व्यक्ति को साहूकारों का ऋण चुकाने के लिए दिया गया 1 लाख रुपए तक का लोन अदर्स की कैटेगरी में आएगा. देन इज लोन गिवन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लाइबिलिटी. लोन गिवन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप कितना हो सकता है? अप टू रुपीज 2 lakhs. अप टू रुपीज 2 lakhs. सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को दिया गया 2 लाख रुपए तक का लोन. किस काम के लिए? यहां पर एक्टिविटीज बताया है. फॉर एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई. अगर वो होती तो वहीं चले जाते. एंड लोन्स फॉर सोशल नीड्स, लोन्स फॉर मीटिंग सोशल नीड्स, मैरिज, एजुकेशन वगैरह. लोन फॉर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउस. कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउस. Loan for construction of toilets. Loan for construction of toilets. इन सब के लिए दिए गए लोन्स अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को 2 लाख रुपए तक के लोन दिए तो वो भी अदर्स में प्रायोरिटी सेक्टर होंगे. एंड द लास्ट इज लोन गिवन टू स्टार्टअप्स. लोन गिवन टू स्टार्टअप्स एंगेज्ड इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई. जो एग्रीकल्चर या एमएसएमई के अलावा कोई और काम करें तो उन्हें दिया गया 50 करोड़ रुपीस तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा. उन्हें दिया गया 50 करोड़ रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा. प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा. प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा. अगला कैटेगरी में इसमें इसी साल दोबारा से चेंज आया एडजस्टमेंट फॉर वेट्स में, इसलिए मैं इसको दोबारा से कवर कर रहा हूं. अगेन इट इज प्राइमरीली फॉर स्केल 3, 4 एंड 5 पार्टिसिपेंट्स, बट बाकी लोग भी इसको देख सकते हैं. एडजस्टमेंट फॉर वेट्स इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अचीवमेंट. दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 21-22. इस साल इसकी लिमिट्स रिवाइज की गई हैं. कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए. हायर वेट of 125%, higher weight of 125% for incremental priority sector credit, for incremental priority sector credit in districts where per capita priority sector lending
where per capita priority sector lending is less than 9,000 rupees, less than 9,000 rupees. उन डिस्ट्रिक्ट्स में जिनमें पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 9,000 रुपए से भी कम है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में आरबीआई ने आइडेंटिफाई किए हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स, वो 186 या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर लोन दिया जाएगा तो जितना लोन देंगे उस पर हायर वेट लगेगा। 100 रुपए का लोन देंगे तो 125 माना जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। ये माना जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर की अचीवमेंट 125% है, ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन इन डिस्ट्रिक्ट्स में दें जहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कम हो रही है। देन लोअर रेट ऑफ 90% टू इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट, जो प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट आगे देने वाले हैं, इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इन डिस्ट्रिक्ट्स वेयर पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग is more than 42,000 rupees, is greater than 42,000 rupees, or is more than 42,000। जहां पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 42,000 रुपए से ज्यादा हो रही है, वहां पर आप और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करेंगे तो जो इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करेंगे उस पर वेट मिलेगा 90% का, यानी 100 की लैंडिंग करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 90 काउंट एंड डिस्ट्रिक्ट्स अदर देन दीज जिनमें ये नहीं है, उनमें दिए गए लोन्स, इंक्रीमेंटल लोन्स भी 100% माने जाएंगे। वो 100% वेट लगेगा उन पर वेट लगेगा 100%। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू आरआरबीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और फॉरेन बैंक्स, उन पर नहीं लगता है रेट्स वाला रूल। नेक्स्ट इज बैंक लोन्स गिवन टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑन लैंडिंग। अभी बात की थी हमने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ऑन लैंडिंग के लिए, तो इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? कौन सी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ऑन लैंडिंग के लिए दिए गए लोन प्रायोरिटी सेक्टर माने जाएंगे? What microfinance institutions, if the bank gives them loan for on lending, will be counted as priority sector? The condition is if at least 75% of total assets of microfinance institution are qualifying assets. Scale 3, 4, 5 participants may please focus on this. The rest of you don't need it. At least 75% of total assets of microfinance institutions are qualifying assets. तब हम उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर मानेंगे। अब क्वालिफाइंग एसेट्स क्या हैं? व्हाट आर क्वालिफाइंग एसेट्स? क्वालिफाइंग एसेट्स मींस loans disbursed by microfinance institutions where household income of borrower, annual household income of borrower is up to rupees 3 lakhs, up to rupees 3 lakhs। लोन लेने वाले बोरोवर की एनुअल हाउसहोल्ड इनकम 3 लाख रुपए तक हो, और जितना हर महीने जितने भी उसने लोन्स लिए हैं उसके कारण से जो उसका कैश आउटफ्लो हो रहा है हर महीने उनकी रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के कारण, वो महीने की इनकम का मैक्सिमम 50% हो सकता है, वो मंथली इनकम का मैक्सिमम 50% हो सकता है। आउटफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ रीपेमेंट, outflows on account of repayment are maximum 50% of monthly household income, maximum 50% of monthly household income। ये दो कंडीशन मीट होंगी तो क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे। मैक्सिमम एनुअल हाउसहोल्ड इनकम 3 लाख रुपीज एंड मंथली आउटफ्लो on account of loan repayments can be maximum 50% of the monthly household income। मंथली हाउसहोल्ड इनकम का मैक्सिमम 50% लोन के लिए इंस्टॉलमेंट आउटफ्लो हो सकता है, तो क्वालिफाइंग एसेट। और अगर कम से कम 75% क्वालिफाइंग एसेट होंगे एमएफआई के, तो उसे दिए गए ऑन लैंडिंग के लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर माने जाएंगे, प्रायोरिटी सेक्टर माने जाएंगे। एक दो और छोटी छोटी बातें ऐसी जो मैं करना चाहता हूं।
आईबीपीसी का फुल फॉर्म लिख सकते हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स लिख सकते हैं, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। स्केल 1 पे स्पेशली फुल फॉर्म हैज बीन आस्क्ड, आईबीपीसी पीएसएलसी का पूछता है वो। आईबीपीसी का फुल फॉर्म है इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स। सो आईबीपीसीज bought by banks on a risk sharing basis। दोनों तरह के आईबीपीसी होते हैं, रिस्क शेयरिंग एंड नॉन रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग वेयर इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जिस बैंक ने यह सर्टिफिकेट खरीदा है उसका बन जाता है, तो वो रिस्क शेयरिंग है, जहां पर वो रिस्क शेयर करता है। ऐसे आईबीपीसी जो रिस्क शेयरिंग बेसिस पे खरीदे जाएं विल बी क्लासिफाइड अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, विल बी क्लासिफाइड अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। जिस कैटेगरी में ओरिजिनेटिंग बैंक ने लोन दिया था, एग्रीकल्चर में दिया था तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई में दिया था तो एमएसएमई, जिस कैटेगरी में दिया था उसी कैटेगरी में आपने जिस कैटेगरी का आईबीपीसी खरीदा है उस कैटेगरी का लोन अगर आईबीपीसी के थ्रू रिस्क शेयरिंग बेसिस पे लिया है तो उसी कैटेगरी में आपकी अकम्प्लिशमेंट मानी जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स by banks in securitized assets. Next is investments by bank in securitized assets. एक बैंक ने किसी और बैंक के loans खरीद लिए which are called as securitized assets, and those loans which the bank has purchased they were given under priority sector। वो priority sector में दिए गए थे, एग्रीकल्चर में, माइक्रो में, वीकर सेक्शन में। तो जिस कैटेगरी में दिए गए थे उसी कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, उसी कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस हैं वो देखिए। दे विल बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर इन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। जो सिक्योरिटाइज एसेट्स लिए हैं, जिस कैटेगरी में सिक्योरिटाइज एसेट्स थे उसी में प्रायोरिटी सेक्टर मानेंगे, प्रोवाइडेड एसेट्स आर ओरिजिनेटेड बाय बैंक्स। पहला लोन जिससे खरीद रहा है बैंक, दैट लोन वाज ओरिजिनेटेड बाय बैंक, दैट वाज ओरिजिनेटेड बाय बैंक एंड इट वाज क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर प्रायर टू सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन से पहले इस लोन की कैटेगरी प्रायोरिटी सेक्टर थी, इट वाज क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर प्रायर टू सिक्योरिटाइजेशन। उससे पहले इसकी कैटेगरी प्रायोरिटी सेक्टर थी। एंड ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट चार्ज टू अल्टीमेट बोरोवर, जिसको लोन दिया गया है उससे ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट ओरिजिनेटिंग बैंक, ओरिजिनेटिंग एंटिटी जो ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट ले रही है, दैट शुड नॉट एक्सीड EBLR प्लस 14% और MCLR प्लस 10% ऑफ इन्वेस्टिंग बैंक। जो बैंक ये सिक्योरिटाइज्ड एसेट खरीद रहा है उसके EBLR प्लस 14% या MCLR प्लस 10% को एक्सीड नहीं करना चाहिए ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अल्टीमेट बोरोवर से चार्ज किया जा रहा है, जो अल्टीमेट बोरोवर से ओरिजिनेटिंग बैंक चार्ज कर रहा है। अगर वो उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था तो फिर ये काउंट नहीं किए जाएंगे। तो ये कंडीशंस हैं फॉर सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स, Then comes priority sector lending certificates. Priority sector lending certificates were last year, there were a couple of questions, I mean, different banks at senior scales, और क्वेश्चन बहुत अंदर जाकर उसने पूछा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट में, मैं अभी बताऊंगा कहां पूछा था। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स PSLCs bought by banks will be classified under respective category of priority sector, under respective category of priority sector। वो कंडीशन तो गिवन है, if underlying assets originated by the banks are eligible to be classified as priority sector। जिसने ये PSLC बेचे हैं जिस बैंक ने, वो बैंक उसके नीचे के जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनको पहले प्रायोरिटी सेक्टर मान चुका हो तभी ये माने जाएंगे। अब इसकी कंडीशंस हैं, एक बैंक कितने के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, एक बैंक इशू करने वाला बैंक कितने एक साल में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। अमाउंट ऑफ इशू up to 50% of banks
investment in priority sector lending of last year या previous year, जितना पिछले साल में इस बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एडवांसेस दिए थे, जितने भी, उसका 50% अगले साल में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स इशू कर सकता है, उसके 50% के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। लॉट साइज ऑफ ईच इंडिविजुअल सर्टिफिकेट, लॉट साइज, एक सर्टिफिकेट का लॉट साइज कितना होगा, ₹25 lakhs, एंड देन इन मल्टीपल्स ऑफ 25 lakhs। मैच्योरिटी पीरियड, कितने टाइम के लिए वैलिड होता है ये, ऑटोमेटिकली मैच्योर फ्रॉम 31 मार्च, साल के बीच में कभी भी इशू करे, अपने आप 31 मार्च में मैच्योर कर जाता है, एक ही साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, ऑटोमेटिकली मैच्योर फ्रॉम 31 मार्च। प्रायोरिटी सेक्टर में कैसे काउंट करेंगे, originating bank, the bank which has issued priority sector lending certificates, उनके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में से इसे माइनस किया जाएगा और परचेजिंग बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ऐड कर दिया जाएगा। जितने का पीएसएलसी खरीदा परचेजिंग बैंक के केस में ऐड कर देंगे और सेलिंग बैंक के पीएसएल से माइनस कर देंगे। दिस विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑफ इशूइंग बैंक, excluded from priority sector lending of issuing bank, and added to priority sector lending of purchaser bank. Issuing बैंक की priority sector lending से exclude कर देंगे और purchaser बैंक की priority sector lending में add करेंगे। कितनी तरह के priority sector lending certificates हैं, एक बैंक में सवाल पूछा गया कितनी तरह के हैं, तो उसका आंसर था 4। दूसरे बैंक में पूछा गया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, उसने मल्टीपल वैरायटीज दी, इसमें से कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट इज नॉट करेक्ट। सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स कैन बी इशूड इन दीज कैटेगरीज: पीएसएलसी एग्रीकल्चर, पीएसएलसी स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर, पीएसएलसी माइक्रो एंटरप्राइज एंड पीएसएलसी जनरल। एग्रीकल्चर small and marginal farmer, PSLC micro and PSLC general, and PSLC general. And PSLC general. ये बात तो हमने की थी कि बैंक लोन्स गिवन टू एनबीएफसीज फॉर एन ऑन लैंडिंग will be classified as priority sector up to a maximum of 5% of banks priority sector lending. बैंक की जितनी priority sector lending है उसका 5% तक ऑन lending का वाला पोर्शन कंसीडर किया जा सकता है। एक लास्ट बात कर रहे हैं इसमें, co-lending by banks and NBFCs to priority sector. अगर NBFCs और बैंक्स मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर के लोन्स दें तो उसमें क्या कंडीशंस हैं, उन्हें कब प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा। इन केस ऑफ co-lending by banks and NBFCs, minimum percentage share of NBFC in each individual loan, हर इंडिविजुअल लोन में NBFC का अपना शेयर कम से कम 20% होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज शेयर of NBFC in each individual loan should be 20%. Should be 20%. Co-lending with NBFC in promoter group, बैंक का अपना ही कोई NBFC हो तो उसके साथ co-lending is not allowed. Co-lending with NBFC in promoter group अगर करते हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर के पर्पस से अलाउड नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस क्या होगा बैंक का? प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस फॉर बैंक विल बी इन द परसेंटेज शेयर ऑफ co-lending, विल बी एज द परसेंटेज शेयर ऑफ co-lending। जितना परसेंट पैसा उस लोन में बैंक ने लगाया है, अगर 60% पैसा बैंक का लगा है तो 60% शेयर बैंक को मिलेगा फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। एंड इंटरेस्ट रेट टू बोरोवर as agreed by bank and NBFC. 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 With this,
our chapter on overview of priority sector is complete. You can type your queries. I will answer them. If you want to leave the session, there is a break. We will start the next class at 12:30. If you have any queries, you can ask me. I will take them. अब टाइप करेंगे हम. हाँ, एक्सटेंट ऑफ लोन अंडर एमएसएमई तो नीड बेस्ड है. और स्टार्टअप्स के केस में लिमिट लगाई है. उसके केस में लिमिट लगाई है कि हम कहां तक काउंट करेंगे. स्टार्टअप्स के केस में लिमिट लगाई है. स्पेसिफाई कर सकते हैं अलग से. नेक्स्ट क्लास का टाइम 12:30 है. नेक्स्ट क्लास विल बी एट 12:30. नेक्स्ट क्लास विल बी एट 12:30. Does staff housing loan get covered in priority sector? No. सेल्फ हेल्प ग्रुप में दिए गए जो 2 लाख रुपए के लोन अदर्स में काउंट होते हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को या इंडिविजुअल मेंबर को? सेल्फ हेल्प ग्रुप को. सेल्फ हेल्प ग्रुप. अगर एक कैटेगरी माइक्रो है और दूसरी स्मॉल है तो क्लासिफाई कहां करेंगे? स्मॉल में करेंगे. तो स्मॉल में करेंगे. तो स्मॉल में करेंगे. एजुकेशन लोन फॉर स्टडिंग अब्रॉड प्रायोरिटी सेक्टर में आता है. यस. द थिंग इज एजुकेशन लोन सैंक्शन अप टू ₹20 लाख. पढ़ाई चाहे अब्रॉड में हो चाहे इंडिया में हो, कोई दिक्कत नहीं है. फॉर डाउनग्रेड कैटेगराइजेशन इन एमएसएमई, इज देयर एनी टाइम लिमिट? नो. फॉर डाउनग्रेड देयर इज नो टाइम लिमिट. जब साल एंड होगा उसके बाद उसकी डाउनग्रेडेड कैटेगरी काउंट हो जाएगी. अच्छा, अब उसके बाद एजुकेशन लोन फॉर स्टडिंग अब्रॉड, ये तो मैंने कर दिया. ये भी हो गया. इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम कवर करेंगे आपके साथ. टीडीएस वगैरह से रिलेटेड जो भी सेक्शन है वो हम कवर करते हैं, करेंगे अलग से. इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर हायर वेट्स. इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब है जो आने वाले साल में एक्स्ट्रा लैंडिंग करेंगे वो इंक्रीमेंटल कहलाती है. और हायर रेट का मतलब है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी बहुत कम लैंडिंग हो रही है वहां पर आरबीआई कहता है कि आपको हम एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे. आप 100 की लैंडिंग करेंगे, 125 का बेनिफिट देंगे, ताकि बैंक्स शुड बी मोटिवेटेड टू लेंड मोर इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स. दैट्स व्हाई. Basis for written down value of plant and machinery, whether we may accept on the basis of, well, whether we may accept on the basis of ABS or PBS, कुछ नहीं करना है. आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करके इनकम टैक्स रिटर्न के लिए डेप्रिसिएशन के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू निकाली जाती है अलग से. वो वहां पर फाइल की जाती है इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी. वहां से वैल्यू उठाएंगे, बोरोवर से वहां से उसकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे, उसके अंदर वो दी है, वहां से उसकी इन्वेस्टमेंट ले लेंगे आप जो लास्ट ईयर में थी, रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही है, बस. उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देंगे. आज की क्लास 4 बजे तक है. आज वहां पे सर्कुलर में जब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर लिखा है वहां पर एरिया ऑफ लैंड लिखा है वो अप टू 1 हेक्टेयर, अप टू 2 हेक्टेयर्स. उन्होंने वहां पर आरबीआई ने ये स्पेसिफाई नहीं किया सर्कुलर में कि लैंड शुड बी इरिगेटेड या अनइरिगेटेड या दोनों काउंट की जा सकती हैं. क्योंकि उन्होंने सिर्फ लैंड होल्डिंग साइज बताया है तो इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि लैंड इरिगेटेड अनइरिगेटेड दोनों तरह की लैंड जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की काउंट करने के लिए ली जा सकती है. आई एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट. अरे एक्सपोर्ट क्रेडिट का अगर कोई भी काम करता है जो इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन बाकी एग्रीकल्चर या एमएसएमई के अलावा कोई भी और काम करे, सिर्फ एमएसएमई में क्लासिफाई ना होता हो और फिर भी एक्सपोर्ट करे तो एमएसएमई के बाहर आ जाएगा ना. कोई भी काम एक्सपोर्ट का करे. ठीक है. आईबीपीसी होता है इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट. बैंक्स जिनका प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट मीट हो जाता है वो इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं और बैंक्स को. दूसरे बैंक्स इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेते हैं ईदर ऑन नॉन रिस्क शेयरिंग बेसिस, उसका कमीशन दे देते हैं कि चलो हमने तुमसे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ले लिया, या
on risk sharing basis, whereby they can say that I am going to share some risk also of default. If they take interbank participation certificate on risk sharing basis, और इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ऐसे लोन्स पे इशू हुआ है जो प्रायोरिटी सेक्टर में दिए गए थे, तो ऐसा बैंक जिसने वो सर्टिफिकेट खरीदा है उसे प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पूरे करने में हेल्प मिलेगी। स्टडी मटेरियल आपको एक और कोर्स बना के दिया गया, मैं बता दूंगा आपको, हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे कि कहां पे शेयर्ड है स्टडी मटेरियल, भेज देंगे आप। An education loan was sanctioned for 40 lakh rupees. Can we take 20 lakhs as priority sector? No. If the sanction amount exceeds 20 lakh rupees, then it cannot be taken as priority sector. Then it cannot be taken as priority sector. चलिए, इसके साथ मैं ये सेशन एंड करता हूं। नेक्स्ट सेशन विल बी एट 12:20।